Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansaar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the consolidated RBI circular on opening of current account and CCOD accounts by the bank. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. So this consolidated circular issued by the RBI on 19th April 2022. This is the latest consolidated circular on opening of current accounts and CCOD accounts by the bank. And the purpose of this uh, circular, this circular consolidate earlier instruction issued by the RBI for operation and the opening of current account and the OD account, CC account. सो अर्लियर आरबीआई ने कुछ सर्कुलर इश्यूज करे थे ऑन डेटेड अगस्त 6 2020, नवंबर 2 2020 एंड दिसंबर 14 2020, अगस्त 4 2021, then 19th October 29th October 2021. So this 5 circular was there. Now one consolidated circular is there regarding the opening of current account and opening of CC OD accounts by the bank and the applicability कि सर्कुलर किसके ऊपर एप्लीकेबल है. दिस इज बेसिकली फॉर द ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, सीसी ओडी अकाउंट्स एंड एप्लीकेबल ऑन ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड द पेमेंट बैंक्स. जो भी जितने पेमेंट बैंक है उनके ऊपर एप्लीकेबल है. एंड आल्सो आरबीआई डिफाइंड द एक्सपोजर कि एक्सपोजर का मीनिंग क्या है. एक्सपोजर मीनिंग सम ऑफ जो भी आपकी फंड बेस्ड एंड द नॉन फंड बेस्ड जो सैंक्शन आपकी जो क्रेडिट फैसिलिटी है बाय द बोरोवर, उनका सम, that's the exposure, and this sum is in the books of the in the Indian books of the borrower. जो उनकी इंडियन बुक्स है उसमें कितना आपका एक्सपोजर है रिगार्डिंग द फंड बेस्ड एंड द नॉन फंड बेस्ड. एंड देन बैंकिंग सिस्टम. बैंकिंग सिस्टम आई ऑलरेडी टोल्ड यू किसके ऊपर एप्लीकेबल है. बैंकिंग सिस्टम हेयर मींस शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड ऑल पेमेंट बैंक्स. सो नाउ सी कि अगर इफ सम बोरोवर वांट्स टू ओपन करंट अकाउंट, अगर उसको करंट अकाउंट ओपन करना है एंड बोरोवर अप्रोच टू द बैंक फॉर ओपनिंग ऑफ ए करंट अकाउंट्स, इन दिस केस बैंक विल आस्क कि अगर उस बोरोवर की कोई सीसी या ओडी लिमिट, कोई सीसी या ओडी इज विद द बैंकिंग सिस्टम, सेम बैंक में नहीं, दे विल आस्क विद द बैंकिंग सिस्टम कि अगर कोई बैंकिंग सिस्टम में कोई सीसी या ओडी अकाउंट है, फैसिलिटी आपके पास है. इफ यस, देन बैंक विल आस्क what's the total exposure, जो aggregate exposure है in the banking system. Again the word is banking system, बैंक नहीं है, banking system में कि आपकी कोई CC फैसिलिटी या OD फैसिलिटी है. and what's the exposure, aggregate exposure कितना है. if it's less than 5 crore या 5 crore or more. अगर it's less than 5 crore, then any bank, कोई भी बैंक can open the current account subject to the undertaking. एक आपको undertaking लेनी है from the borrower that in case limit goes to 5 crore or more will intimate to the bank and then bank will check कि क्या as per circular क्या terms and condition है, then bank will follow. but अभी अगर उसकी limit less than 5 crore है, exposures जो आपका aggregate exposure है, then can open the बैंक करंट अकाउंट विद एन अंडरटेकिंग. एंड इन केस जो आपकी एक्सपोजर है, एग्रीगेट एक्सपोजर है, इफ इट्स 5 करोड़ और मोर, देन इन दिस केस कौन सा बैंक आपका करंट अकाउंट ओपन करेगा. इन दैट केस द बैंक विच हैव एटलीस्ट 10% ऑफ द एक्सपोजर, जहां पे आपकी सीसी लिमिट, इफ इट्स विद वन बैंक तो उसी बैंक आपका, वही बैंक आपका अकाउंट ओपन करेगा. बट इफ इट्स मोर देन वन बैंक, देन हैव टू सी विच इज द लीडिंग बैंक कि किसके पास ज्यादा एक्सपोजर है एंड एटलीस्ट 10%. और अगर 10% नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी बैंक का 8% टोटल एक्सपोजर का 8%, किसी का 3%, किसी का 2%, देन विद द 8% जो बैंक आपको मैक्सिमम एक्सपोजर प्रोवाइड कर रहा है, दैट विल ओपन द अकाउंट, करंट अकाउंट. उस जो बैंक है उसके पास आपको अकाउंट ओपन करवाना है. एंड रिगार्डिंग द अदर लैंडिंग बैंक जो 3%, 2% वाले हैं, दे कैन ओनली ओपन द कलेक्शन अकाउंट्स. मेन अकाउंट तो आपका जो
लीडिंग बैंक है जहां से आपके पास मैक्सिमम एक्सपोजर है वो ओपन करेगा। जो बाकी आप वहां पे ओपन करवा सकते हो दैट्स द कोलेक्शन अकाउंट्स। एंड कोलेक्शन अकाउंट्स में आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन यू कांट डू। उसमें ओनली क्रेडिट्स अगर आपके आ रहे हैं देन इट्स द ड्यूटी ऑफ द बैंक कि आपके विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम विद इन 2 days या जो भी वहां पे प्रोवाइड करा है आरबीआई ने, शुड ट्रांसफर टू द मेन अकाउंट। एंड यस, अगर कोई डेबिट अमाउंट्स हैं, अगर कोई चार्जेस हैं बैंक में, दैट कैन डेबिट बाय द बैंक, वो आप रिड्यूस कर सकते हैं एंड द रिमेनिंग अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द मेन अकाउंट। एंड रिगार्डिंग द नॉन लैंडिंग बैंक, कोई और बैंक है, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है, दे कांट ओपन द करंट अकाउंट्स इन केस अगर उसका एक्सपोजर 5 crore और मोर है। क्लियर? एंड नेक्स्ट केस, in case borrower doesn't have any CC or the OD facility, then have to check what's the aggregate exposure, कि अगर exposure अगर other than CC or OD कोई और aggregate exposure है like term loan है या some other exposure, so in these three cases are there: less than 5 crore aggregate exposure, 5 crore, less than 50 crore, 5 crore and above, and less than 50 crore, 50 crore and above. So if exposure other than CC and OD facility, if it's less than 5 crore, then any bank can open the current account subject to undertaking, जो अभी हमने डिस्कस किया था undertaking borrower से लेके can open the current account if the aggregate exposure is less than 5 crore. If aggregate exposure in second case, if aggregate exposure is rupees 5 crore or more but less than 50 crore, in that case any lending bank can open the current account and non-lending bank can only open the collection account. In this case आप कहीं से भी ओपन करवा सकते हो, एनी लैंडिंग बैंक जो आपके हैं वो दे कैन ओपन करंट अकाउंट, एंड नॉन लैंडिंग बैंक्स जो है दे कैन ओनली ओपन कलेक्शन अकाउंट्स। एंड इन थर्ड केस, if the aggregate exposure 50 crore or more, अगर ये 50 crore or more है, then in this case mandatory escrow mechanism will be required, and lending bank acting as escrow managing bank agent can open account, जो भी आपके lending banks हैं वहां से कर सकते हो, and non lending banks हैं, जो non lending bank है shall not open any current collection accounts. This is regarding the opening of current accounts. Then in next another consolidation जो circular है उसके अंदर another है if opening of cash credit or the OD account, अगर किसी borrower को CC account या OD account open करना है and if he approach to the bank, then bank will ask the same question: any exposure with the bank, banking system, not bank. अगेन आई एम सेइंग हियर द वर्ड इज बैंकिंग सिस्टम। उसको ये नहीं चेक करना बैंक्स के पास है या नहीं, बैंकिंग सिस्टम, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड ऑल पेमेंट बैंक्स। तो बैंकिंग सिस्टम में कोई एक्सपोजर है, इफ इट्स लेस देन 5 करोड़, इफ इट्स 5 करोड़ और मोर, तो अगर लेस देन 5 करोड़ है देन CCOD फैसिलिटी can be availed without any restriction placed by this circular subject to undertaking from the borrower, कि आपको undertaking लेनी है कि in case if it's exceeds 5 crore, it's up to 5 crore and exceeds, तो will intimate to the bank. And in case 5 crore or more, then two cases are there: if bank exposure to the borrower 10% or more of the aggregate exposure, कि जिस बैंक के साथ वो CC अकाउंट या OD अकाउंट कर रहा है उसी के पास 10% है उसके एग्रीगेट एक्सपोजर का, देन CCOD फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड बाय द सर्कुलर। इफ नो, then CCOD facility can be availed, however it can be used only for the credit in the account. The debit can be only to the remit the fund CCOD account on the funds borrower, जो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपको सिर्फ अकाउंट्स में आपके जो भी रेमिटेंस आ रही है एंड आफ्टर डिडक्टिंग द डेबिट जो भी अमाउंट है यू हैव टू रेमिट द फंड इनटू द मेन अकाउंट। दैट्स द रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ कैश क्रेडिट OD अकाउंट। सो इसके कुछ exemptions also there. So RBI said कि for these account, opening of current account जो इन्होंने लिमिट लगाई है 5 crore 5 crore more, this have some exemption, कुछ exemption है in case of specific account, कि कुछ स्पेसिफिक अकाउंट है रिगार्डिंग द
कुछ वेरी स्टैच्यूट एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द रेगुलेशन रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, तो उस केस में क्या है, लाइक अकाउंट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तो कुछ मेंशंस है रियल एस्टेट के जिसमें आपको 70% एडवांस पेमेंट कलेक्टेड फ्रॉम द होम बायर्स उसके केस में, या फिर नोडल और एस्क्रो अकाउंट्स ऑफ पेमेंट, देन अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ आईपीओ, एनएफओ, एफपीओ, शेयर बायबैक, डिविडेंड पेमेंट, इंश्योरेंस ऑफ कमर्शियल पेपर, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, ग्रेचुटी, तो उस केस में भी एग्जम्पशंस है। देन कोई अकाउंट्स अगर आपने ओपन करवाया अंडर द फेम ऑफ प्रोविजन, देन आल्सो, या कुछ अकाउंट्स फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, स्टैट्यूटरी ड्यूज एक्सेट्रा, उस केस में अकाउंट फॉर सेटलमेंट ऑफ ड्यूज रिलेटेड टू डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर अकाउंट फॉर वाइट लेबल एटीएम ऑपरेशन ऑफ देयर एजेंट्स जो एटीएम्स वगैरह में पेमेंट्स वगैरह डालते हैं, then account of cash in transit companies, cash replacement agencies, and then account open for bank funding for a specific project, interbank account, account of all India financial institution, Exim Bank, NABARD, NHB, SIDBI, account is set by the order of central or state government. So these are some exemption regarding these account की, मतलब इनके लिए कोई ऐसी restriction नहीं है for these account. And then कुछ और इंस्ट्रक्शन आरबीआई ने इशू करी है इन दिस कंसोलिडेटेड सर्कुलर। दे सेड कि जितने भी बैंक्स हैं, मींस दे आर गिविंग ओपनिंग द करंट अकाउंट, आर प्रोवाइडिंग द सीसी ऑडिट फैसिलिटी, दे शुड मॉनिटर रेगुलरली and at least on a half yearly basis they should check the aggregate exposure कि कोई इफ देयर आर एनी चेंजेस कि किसी बैंक में फॉर एग्जांपल 8%, 5%, 3% जो हमने डिस्कस कर दिया, तो वेदर द एग्रीगेट एक्सपोजर इज द सेम और इट्स चेंज, और अगर एक्सपोजर में चेंज हो गया देन दैट सच चेंज शुड बी इम्प्लीमेंटेड विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच मॉनिटरिंग, कि अगर किसी का ज्यादा हो गया देन हैव टू रिवर्स, वहां पे मेन अकाउंट ओपन होगा, बाकी कलेक्शन अकाउंट्स होंगे। एंड देन also some other instruction RBI said bank should note, this is very important, कि जो आपके टर्म लोन है this should not be routed from the CC or the OD or the current account of the borrower, this should be remitted directly, कि अगर उसका आइडेंटिफाइबल है देन पेमेंट शुड बी डायरेक्टली पेड, एंड इन केस इट्स अनआइडेंटिफाइबल मींस गुड्स एंड सर्विस वगैरह के लिए नहीं है, पेमेंट डेजिग्नेशन इज नॉट अनआइडेंटिफाइबल, देन यू कैन रूट थ्रू दिस अकाउंट, आप इस अकाउंट से आप रूट कर सकते हो। एंड इवन एक्सपेंसेस, जो आपके एक्सपेंसेस हैं बैंक्स के डे टू डे ऑपरेशन रिलेटेड, दैट आल्सो यू कैन डेबिट फ्रॉम दिस अकाउंट, अदरवाइज you have to remit into the main account. So this is regarding the latest RBI consolidated circular relating to opening of current account and the CCOD account. So thank you very much. In case if you have any feedback, suggestion, please you can send message or mail to me. And also my request to all of you, please also एक like भी कर दीजिए कीजिए, व्यूज तो आते हैं 2000, 5000, 10,000 लाइक्स ओनली 300, 400, सो लाइक्स में कुछ जाता नहीं है, एक बटन ही प्रेस करना पड़ता है एंड इट अप्रिशिएट अस, आपके एक लाइक से ही वी रिसीव लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।